तमिलनाडु रे केमती टीवी के एक बड़ शक्ति भाव में उभा होइछि एवं कौन कौन सबू फैक्टर से काम करिछि या सहित वोट शेयर केते बढ़िछि केते कमिछि केउ केउ दलर से बाबद रे आलोचना करथिले एम के स्टालिन केमती तांको निर्वाचन मंडली हारी जाइछंती बा तांको गड़े केमती टीवी के प्रार्थी जीतिछंती से बाबद रे भी आमे आपण को चित्र देखाउथिलु। वर्तमान समय आम सहित उपस्थित रही अधिक आलोचना करने सहित ललाटेन्दु दास कांग्रेस मुखपात्र सहित दास आपन को स्वागत कनक न्यूज को आलोचना को सहित दास टी कांग्रेस बाबद आलोचना करवा आपण जदियो सबुठी निराशाजनक खबर अच्छी किंतु जदि आप देखिए ताले केरल रे टिके आपण खुशी खबर अच्छी भल खबर अच्छी आपण मेंट से जीतुची किंतु जदि देखिए ताले पश्चिमबंग विषय में टिके आलोचना करी जो पश्चिमबंग रे टीएमसी और बीजेपी मध्य तीव्र प्रतियोगिता चलला और बीजेपी से बड़ दल भाव में उभा होइछि प्रथम थर पर सरकार करिबो किंतु जदि आप देखिए पूरापूरी इतिहास पश्चिमबंगर ताहले सेठी कांग्रेस ही प्रथमे सरकार को आसला और तापरे वाम दल सरकार कला और तापरे टीएमसी आसला किंतु वर्तमान कांग्रेस रो एभली स्थिति काहे एथर निर्वाचन में तो अति शोचनीय स्थिति ऐतिहासिक विजयर मुहूर्तत आमी अत्यंत विनम्रतारे सहित कब विचारिम जे निर्वाचনৰ সময়ত आमी आपनालोকক दिया प्रतिটো प्रतिश्रुति पालन करार बारे आमी निष्ठारे सहित काम करिम। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय जोआ 10टा बछरे जी धरणे आमार राज्यखনৰ विकासत बरंगनी जोगाले আজি অসমৰ ৰাইজে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वर ऊपर पुनर एबार आस्था प्रकाश करिले तृतीयबार एकेधारे आमार सरकार गठन करा भारतीय जनता पार्टीर राज्यসমূहर भितरत अहोमेও निजर नाम अंतर्भुक्त करिब पारिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक मैं पुनर एबार आजिर विजयर ऐतिहासिक मुहूर्त कृतज्ञता ज्ञापन करिছোঁ। आमार दलटोक এই विजयत नेतृत्व दिया आमार राष्ट्रीय सभापति श्री नितिन नवीन डांगरिया और अहोমৰ शांति प्रतिष्ठार পৰা विकासলৈকে এই সমগ্ৰ কৰ্মযজ্ঞত আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰি থকা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াকো আজি আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বিশ্বাস কৰিছিলে যে আমি নিৰ্বাচনত 100টাতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব পাৰিম আৰু সেই বিশ্বাসেৰে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিলোঁ। ৰাইজক আমি বিনম্ৰতাৰে সৈতে ভোট বিচাৰিছিলোঁ। ৰাইজে হিয়া উজাৰি আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে। পুনৰ এবাৰ মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলৰ কৃতজ্ঞতা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সাংবাদিকসকলে যদি প্ৰথমতে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকলে মোক যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিব খোজে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম। মই নাভাবোঁ যে নিৰ্বাচনত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো কিবা ইছ্যু আছিলে। সদায় মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত। কংগ্ৰেছে নিজৰ মেনিফেষ্টোত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয় উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে অসমীয়া ৰাইজৰ পৰা বহু যোজন আঁতৰি গ'ল আৰু মই ভাবোঁ যে এনে ধৰণৰ যি কংগ্ৰেছে পৰাজয় লাভ কৰিলে তাৰ এটা কাৰণ হ'ল যে জুবিন গাৰ্গক লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰা। অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক আজি এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ বাবে এক প্ৰকাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে। মই আগতে কৈছিলোঁ যে তিনি গগৈ এই শব্দটোৱে আমাৰ জাতিটোক বিখণ্ডিত কৰাৰ এক প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিলে। অসমৰ ৰাজনীতিত কেতিয়াও উপাধি জাতি আৰু বৰ্ণলৈ ৰাজনীতি হোৱা নাছিল। লোক